Very good evening to you. Welcome to Game on Hay. We are nearly there. We are nearly through the Super 12s of this World T20. And now we are absolutely certain we know the semi-finalists after today's two games. So if you summarise first of all the games we've seen today before we get on to discussing them. The first game was, he says, the second game actually was Pakistan-Scotland, the one we've just been finishing watching, where Pakistan cruised to victory by 72. 189 for 4, played 117 for 6. Scotland had their moments. They were pretty good bowling in the power play against Pakistan, but then the strength of that Pakistan batting lineup took them away to a very, very imposing total, 1 run short of 190. Scotland started slowly, never really increased. Richie Berrington, a half century for him, he'll remember, against this Pakistan side, so 54 not out for him, but Pakistan winning that very comfortably in the end by 72. So maintain their unbeaten record. The other match today, earlier in the day, Afghanistan against New Zealand. Afghanistan opting to bat first there. Only 124 for 8 for them, despite that Najib 73 from 48 balls. Again, something he'll remember from this World T20. But New Zealand always under control, getting to their target in the 19th over, winning by 8 wickets. The captain to the front again, 40 not out for Kane Williamson, 36 not out to Devon Conway, and again a very comfortable victory. So no upsets in the two games today, and that means of course that we know exactly who is top of the table in Group 2. As expected, Pakistan maintaining their unbeaten record, 5 matches played, 5 matches won, 10 points on the board. They topped the group, and the only other question is whether New Zealand would slip up today against Afghanistan. Well, it seemed very little danger of that, and that's how it turned out. So New Zealand comfortably second with 8 points. India are out, as are Afghanistan and the other two sides in that group. So now we know where and when and who the semi-finals will be about. First of all, England play New Zealand on the 10th. Coverage in Pakistan will start at 7 o'clock in the evening. That game will be in Abu Dhabi. Secondly, on the 11th, Pakistan will take on Australia. Again, 7 o'clock Pakistan time. That, though, will be in Dubai. And the final, of course, on the 14th, also in Dubai, also at the same time. So there we have it. Thanks for watching. We'll see you next time. Good evening to everyone. Nice to see you all again. Sana, no surprises then today. The job was done very effectively by both New Zealand and Pakistan. Yes, quite clinical performances from both these teams, as we thought that New Zealand had more method to their game. They showed that. Kane Williamson being the captain that he is, led from the front, 40 runs in that important chase to put them in the semi-finals, and Pakistan was again very clinical performances from the middle order, which is going to be a very positive sign going into the knockout. They're still looking, I have to say, as a neutral observer, Pakistan looking very, very good. I mean, they're ticking all the boxes. Very, very few things to worry about. The right men are getting runs. The right men are getting wickets. Shadab with the bowling also. Yeah. So yeah, I mean, they look like a very gelled team, and hopefully that those knockout matches will be great to watch. I'm sure it'll be great to watch, and hopefully you get the right result. Yeah, and hopefully just for you, one game. The second one. Hang on. The second one for us. I'm glad you explained that. I thought for a moment you're saying England just one semi-final. Thank you very much for coming. Off you go. Yeah. But no. It'd be very nice to see you in the final. Yeah, and then the good game for us again. Okay. Well, you never know. You never know. Yeah. So बहुत बहुत मुबारक हो. पाकिस्तान टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया. साथ न्यूजीलैंड हमारे ग्रुप से क्वालिफाई किया है. दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड. कैसा देख रहे हैं राशिद भाई? चारों सेमीफाइनलिस्ट अब कंफर्म हो गए. ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस रही हैं इस टूर्नामेंट में, आपने कहा कि मैचेस इतने मिस मैच थे, ज्यादा कुछ मैचेस नहीं. आज का मैच था जो लोगों ने इतनी हाइप बनाई हुई थी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की, और वजह भी यही थी कि इंडिया की टीम से ताल्लुक था उस मैच का. लेकिन मिस मैच था. सुबह भी बोला था कि मिस मैच था. मुकाबला नहीं था उस टीम से, क्योंकि अच्छे प्लेयर थे. एसोसिएट मेंबर के खिलाफ शहजाद हो जाए या गुरबाज हो गया या जाजाई हो गया, गुड प्लेयर, बट इनके खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल तो करनी थी और की उन्होंने.
जो नजर आ रहा था वो नजर, न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जो इंग्लैंड को हरा सकती है। मे भी पाकिस्तान को डिफिकल्टीज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया को होती है, न्यूजीलैंड अपने दायरे से बाहर नहीं निकलती। उनके बॉलर भी ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने पूरे उड़ा दिया सबको, एक नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं और ऑन अ डे जिस तरह से खेलना, मैचअप के साथ खेलते हैं वो, और पूरा देखें बहुत ज्यादा रन भी नहीं करते लेकिन वो मैच जीत जाते हैं। बहुत चेज में भी आराम से करते हैं, विलियमसन आता है, तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। हम देख रहे हैं दूसरी टीम को देख रहे हैं, लाइक पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर, ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर कोई भी नहीं चल रहे अभी नीचे से। न्यूजीलैंड की टीम है जो नीचे से भी रन कर रही है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आया फेवरेट पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है। तो न्यूजीलैंड डेंजरस लग रही है। तो आज उन्होंने 18 ओवर्स में ऑब्वियसली बड़ा कंफर्टेबली जीता। वो 13 पे भी करके क्या कर लेते हैं, उनको नॉर्मल गए, आराम से किया। मिस्टेक की राशिद खान शुरू में आया ही नहीं, जब 124 चेज करने तो राशिद खान को आ जाना चाहिए। 7वें ओवर में आया, विकेट लेनी चाहिए थी। वो विकेट जब तक नहीं लेंगे आपको इश्यूज आते हैं, लेकिन ये कि न्यूजीलैंड ने कमाल खेला है और बाकी पाकिस्तान नामी काफी है। नामी काफी है। उमर भाई आप बताएं, आपको न्यूजीलैंड, आप भी ये बात कर रहे थे कि शायद मैच थोड़ा क्लोज होगा, 20-25 रन ज्यादा होते हैं, आपको लगता है कि कुछ मुश्किलात आ सकती थी न्यूजीलैंड के लिए, या कि वाकई आप यही समझते हैं कि बहुत ही अच्छी टीम है न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान के मुकाबले में? 25 to 30 रन शॉर्ट थे, जिस तरह कैप्टन ने भी मेंशन किया, और जिस तरह का विकेट था आज, थोड़ा सा ये था कि बॉल उस तरह नहीं आ रहा था लास्ट में, जिसकी तरह स्लो रह गया था। तो मेरे ख्याल से उनके बैट्समैनों से जिस तरह हम बात कर रहे थे कि उनकी जो वीक पॉइंट है वो बैटिंग ही है, एक नबी और नजीबुल्लाह जो वो थोड़ा सा ऐसे लग रहे थे कि लंबी इनिंग्स खेल सकते, जो कि नजीबुल्लाह ज़बरदस्त खेला है, और एक पोजीशन पे लेके गए, एक टाइम पे लग रहा था कि 100 के अंदर ही आउट हो जाएंगे, लेकिन एक पोजीशन पे ले गए, लेकिन स्टिल वो 25 to 30 रन शॉर्ट थे, और बॉलर उनके पास अच्छे थे। लेकिन बात वही आती है कि बोर्ड पे कितना रन है, आप प्रेशर कितना डालते हो, और ऑन द अदर साइड दूसरी टीम जितने गेम अवेयरनेस के साथ वो खेल रहे, और जिस तरह कैप्टन ने एंकर रोल प्ले किया और पूरे मैच को लेके गए, ऑल दो उनको पता ही था कि जो रन रेट वो इतना नहीं है, बॉल टू बॉल वो खेलते रहे, और उनके जो मेन स्ट्राइक बॉलर थे उनको विकेट नहीं दी, ऑल दो उन्होंने एक आध विकेट ले भी ली, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, और साथ में दूसरे जो प्लेयर था उसको बड़ा ज़बरदस्त चलाया। कॉनवे ने बड़ा ज़बरदस्त इनिंग्स खेले, कोई प्रेशर नहीं लिया, कोई पैनिक बटन नहीं थे, बड़ा ज़बरदस्ती उन्होंने टैकल किया, राशिद को भी और मुजीब को भी। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त खेले ओवरऑल, और एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड से ऐसी परफॉर्मेंस जबरदस्त। और टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, अजहर भाई पूरे पैनल ने यही बात की थी कि अफगानिस्तान के लिए पेस को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, और 5 विकेट्स इन दोनों जो इनके नए बॉल के बॉलर्स हैं इन्होंने ली, तो काफी अच्छा एनालिसिस भी रहा इस टीम का, और जो ओवरऑल बॉलिंग नजर आई है बहुत ही डिसिप्लिन्ड, और जो फील्डिंग है मिचेल्स की जो बाउंड्री पे जो हमने आज देखा, बहुत ही एक जबरदस्त यूनिट लग रही है न्यूजीलैंड की। देखिए न्यूजीलैंड हमेशा से जो है ना वो एक गुड यूनिट आपको मिलेगा, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा जो है ना उनकी टीम में इतने बड़े नाम नहीं होते, लेकिन हमेशा वो बड़े टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल और फाइनल तक वो जाते हैं, बिकॉज उनकी बड़ी डिसिप्लिन है, हर शोबे में वो डिसिप्लिन होते हैं। फील्डिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें। आज का भी अगर आप मैच देखें, जैसे आपने बॉलर्स की बात की, साउदी बोल्ट, आपसे यही सुबह भी हमने ये बात की थी कि वो बड़े डिसिप्लिन है, उनको पता है कि कहाँ बॉलिंग करनी है। आज भी अगर आप देख लें तो उन्होंने वही जो इनके गेंस्ट ही अफगानिस्तान के गेंस्ट जो शॉर्ट पिच बॉलिंग की है, उन्हें पता था कि कहाँ बॉल करने हैं, उन्होंने आसानी से बॉल जो है ना उनके रडार में नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको मुसीबत पड़ी है। और ये जजाई, शहजाद और गुरबाज जो है ये डेफिनेटली क्लीन स्ट्राइकर हैं, अगर इनके एरिया में बॉल मिले, अगर इनको जो है ना, जब आप इन्होंने आगे फ्यूचर में अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो इन लोगों को अपनी गेम को जो है ना हर तरफ खेलना पड़ेगा उनको, शॉर्ट पिच बॉलिंग के अगेंस्ट। डेफिनेटली आपने देखा होगा सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स जो है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा सा हल्के होते हैं, बिकॉज हमारी पिचेज इस तरह नहीं होती और हम आगे जाके फ्रंट फुट पे खेलते हैं सारी क्रिकेट, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा अगर जो आपको कम्पीट करना है। जैसे पाकिस्तान ने भी काफी सारे लोग हैं जो स्ट्रगल किया है शॉर्ट पिच बॉलिंग पे, तो हमें इस चीज पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा। सो द ओवरऑल एज राशिद सेड देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप ऑफ अफगानिस्तान might be able to beat New Zealand, but
as he said that I've been telling that New Zealand has got a very good side, solid side, and as we analysed in the morning as well, all of us said that they won't be able to handle the pace bowlers, and that's what we saw. 5 wickets between Tim Southee and Trent Boult, 1 for Milne, 1 for Neesham. So that was the key for New Zealand and all their disciplined bowling and fielding. Cool. All right, thank you very much. I was going to ask you a question. Do we think, Viv, that the right 4 teams are in the semi-finals? Do we feel sorry for anyone? Well, obviously apart from the West Indies. And the Indians? No one there. Might have been where I was pushing you. Do you feel sorry for India? Not really. But if you haven't played well enough, you deserve to be where you're at. Absolutely. You know, but I believe that the teams that are basically where they are at present would have played well enough to warranty the positions that they're in at present. They would have played some magnificent cricket. And we are speaking about New Zealand's performance today, and I would have loved to have seen a much better performance from Afghanistan. That wasn't to be. Why I think that happened was the fact that New Zealand covered all their bases. They bowled as well as they could. They restricted Afghanistan to 120, 124. And as you can see, Najibullah was the only guy who really sort of put up a fight. The other 2 guys, only 2 other guys got into double figures. So that suggests that New Zealand would have done a magnificent job. And in the field, they were just brilliant. Some of the best outfield catches that you would see. I'll ask the same question of Akib about the finalists, the semi-finalists. Do we feel that's about right? The only thing is because they were playing in UAE, in these conditions, you can't forget India. But if you look at their combination, if you compare the combination, especially the bowling combination with New Zealand, so New Zealand bowling has more bases, 3 genuine seam bowlers and 2 good spinners, left armer and leggy. They're proper wicket-taking options they have. And Neesham, he was very useful, very intelligent. So they have 6 good bowlers. India, Bumrah, yes. Shami is not that impactful bowler against stronger team. He's a good bowler. But apart from this, they have like spinners, Jadeja and Chakravarti. Look, Chakravarti tried to bowl carom ball, but doesn't turn until it's spinning on the surface. Only then you will be wicket taker. Only bowling carom, you won't be as good as somebody unplayable. So we've been discussing Indian bowling was not that strong, and when it comes to difficult pitches where your bowling add a lot, because if there is something in the pitch, then you just attack the team and bowl them out in 120, 124. This is what happened. And Australia surprised everyone. There were few discussions, they haven't played together, few are coming back from the injuries, but in the end they have put up very good bowling lineup. They're peaking at the right moment. Yes, they got Pace, Hazelwood, Cummins, Stark with Zampa bowled beautiful in the entire tournament. So I think rightly, forget about the repo, forget about anything, forget about IPL champions. But in this tournament, I think the 4 deserving teams are in the semis. Yeah, fair enough. I mean, South Africa's about the only team you can feel sorry for because they played. But if you compare South Africa with these 4 teams, these all 4 teams are well equipped and stronger than South Africa. Yeah. So very quickly, just on that Pakistan versus Australia matchup in the semi-final. I mean, I know you're obviously very, very confident. No, it's not. That's desire. But when it's come to reality, Pakistan has to improve their first 10 over batting performance, because in the end they've been hitting against they won against Sri Lanka and one against Afghanistan. There was like they were chasing
14, 13 overs. No, not against Sri Lanka. They were not in our pool. It would be, Oh, sorry. Yeah. It would be Afghanistan. Asif Ali played to Afghanistan New Zealand. and New Zealand. Yeah, New Zealand and Afghanistan. But if you're going to play the same partner, and then in the end you are 12 and over, and you're facing like Mitchell, Stark, and Cummings. it will be a tough call because every time you can't. Everyone is watching you how you're building your match and where you're going to finish. So I think it's going to be difficult for Pakistan if they were going to play the same pattern of. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगर देखते हो, देखिए 2 ऊपर से रन करने वाले प्लेयर हैं, फिंच और वार्नर. अगर ये ऊपर से आउट होते हैं, इनकी भी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं लगती. बिल्कुल पाकिस्तानी बॉलिंग भी है स्ट्रांग, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं ना इन्हीं टीमों के खिलाफ भी पाकिस्तान ने मैच को लंबा किया है और एक ऐसी सिचुएशन में जाके जीता है वहां पे यू कैन मेक और यू कैन ब्रेक. और अगर कोई अच्छा बॉलर है, सीजन बॉलर, सीनियर बॉलर, इट्स नॉट इजी टू गो फॉर even 5 years of 5 overs of 12 and 13 runs. Well, I can tell you, Savir was nodding in approval there, both when you spoke Urdu and English. So both senses, he's with you. Oh, you Okay, understand. look amazed, look amazed, look away. To be fair, there are certain words that I do and appreciate. Okay, right, we'll talk about that later. Right, time to take a little break. We'll be right back with you. Lots more to discuss. This is Game on Hay.